Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we see about cost one our missing part, that is the constants. We in last video we see about tokens, what are the tokens, what are strings, and we see what are the identifier keywords, all these things, and we see some basic data types also. But generally we use built-in data type, and how we use and how we create it, user defined data type, as well as uh, uh, derived data type. Okay, and again we see what is the ranges of various data types, that is character, unsigned character, all these things. And now we see what are the constant. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब जो वन टाइम ही रीडेबल होता है, मतलब वन टाइम ही उसमें हम डेटा पुटअप कर सकते हैं, एंड इट कैन नॉट बी चेंज इन इंटायर प्रोग्राम। ओके, अब दो टाइप के कांस्टेंट है उसमें, राइट? इन सी प्लस प्लस देयर आर टू टाइप्स, विच आर दे यूजिंग द क्वालिफायर कांस्टेंट and defining a set of interior constant using enumeration, that is the enum, right? And here is a one line put up, that is a value declared as a constant cannot be modified by a program. अगर एक बार हमने constant की वैल्यू डिफाइन कर दी या डिक्लेयर कर दी, तो हम पूरे एंटायर प्रोग्राम में उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कांस्टेंट इंटीजर किसी इंटीजर को मैं कांस्टेंट डिक्लेयर करता हूँ, एंड इट गिव सम वैल्यू to its variable, so it cannot be changes in entire program. Okay, so it's fixed, and whenever we use this size variable, it have some value, that is the only 10. And देखिए यहाँ पे बताया गया, दिस डिक्लेयर साइज एज एन इंटीजर कांस्टेंट having the value 10. Another meaning of naming constant is enum. So it have to some we pass some coordinates, xyz values, uh, that 0 1 2 respectively. It may be x is equal to, इन शॉर्ट हम उसमें डेटा पास करके उस वैल्यू को कांस्टेंट कर सकते हैं। जनरली हम इसे कोऑर्डिनेट्स के टाइम में यूज़ करते हैं, राइट? सो इन फ्यूचर हम इसे यूज़ करके देखेंगे, एंड देयर यू गेट सम मोर क्लियरिटी अबाउट दिस इनम। ओके, सो इन सी प्लस प्लस डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, हम इसमें डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, राइट? In C++, all the variable must be declared before they used in the executable statements. They can be declared anywhere in the program. Just before use of variable, we can declare a variable. This makes writing a program much easier. It is also makes the program easier to understand. अब देखिए, जब भी हम C++ का कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, सो उसमें हमें वेरियस टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ेंगे, राइट? सो वेरिएबल्स हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, बट बिफोर यूजिंग इट वी हैव टू डिक्लेयर बिफोर यूजिंग इट। ओके, सो हमें जब भी उसे, अगर देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, सपोज मुझे एक वेरिएबल यूज़ करना है x, एंड आई डिक्लेयर इन टॉप ऑफ द प्रोग्राम। ओके, so float is equal to x, and I declare another value, that is a float is equal to sum, but it's have zero value, and it is not a constant, so it is this value will be some value will be changeable. Okay, so here I do some addition, that is the sum plus whatever the x value, and I want to print that some value, or divide that some value to a third variable. So I again declare here one variable, that is the AVE, and store sum divided by I value to A. Okay, so whatever the result is generated by this sum divided by I, it is result stored into the AVE variable. Okay, सो एक समझ लीजिए, हम जब भी प्रोग्राम करेंगे तब मैं और से इसे समझाऊंगा।
so you have you get some more clarity. अब देखिए वेरिएबल में दो टाइप के वेरिएबल होता है, एक होता है रेफरेंस वेरिएबल और दूसरा होता है डायनेमिक वेरिएबल या डायनेमिकली इनिशियलाइज ऑफ वेरिएबल। सो इसमें हम वेरिएबल को डायनेमिकली कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं हम देखेंगे। एक रफ ओवरऑल जो भी मैं बता रहा हूँ अभी वो जस्ट रफ ओवरऑल देख लीजिए कि उसका मतलब क्या होता है। वेन एवर वी यूज इट आई विल अगेन एक्सप्लेन अबाउट दिस वेरिएबल्स। ओके, so don't take tension about that. Only see and whatever their use, how can we what are their explanation, only see only that thing. Do not panic about that how can we use and all these things. So don't take tension, मैं इसे समझा दूंगा बाद में जब भी हम प्रोग्राम करेंगे, राइट। So C++ permits initialization of variable at runtime. This is called as the dynamic initialization. देखिए क्या होता है कि हमें मोस्ट ऑफ टाइम जब हम लार्ज प्रोग्राम करेंगे, जब भी हमारा लाइन ऑफ कोड्स ये बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि 200-2000 लाइन्स तक भी कोड रहता है, राइट। दैट टाइम वी नॉट यूज स्टैटिक वेरिएबल्स। कितना स्टैटिक वेरिएबल यूज करेंगे, राइट। स्टैटिक और डायनेमिक दो रहता है ना। स्टैटिक वो रहता है जिसमें हम इनिशियलाइजेशन पहले ही कर देते हैं वैल्यू की, राइट, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, ये जो फ्लोट सम इज इक्वल टू 0 दिख रहा है दैट इज द स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। ओके, बट डायनेमिक में क्या होता है कि हमें रन टाइम उसे वैल्यू को स्टोर करना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है फ्लोट एरिया इज इक्वल 3.4 इंटू रेड। ओके, दैट इज द रेडियस। so here it initialize the dynamic value of that thing. Okay, so whenever we use that, it dynamically changes their value and it returns us result. Okay, so पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऑब्जर्व दैट डिक्लेरेशन द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली at a place where the variable is used for first time. The dynamic initialization is extensively used in object oriented programming. Okay, नेक्स्ट इज द सिंपल है। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन सिंपल थिंग है कि जो हम रन टाइम में जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब रन टाइम में प्रोग्राम में वैल्यूज में चेंजेस होंगे, दैट इज द, जब भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी दैट इज द डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। रेफरेंस वेरिएबल, a reference variable provides an alternative name for the previously defined variable. A reference variable is be created as follows. अब इसमें रेफरेंस वेरिएबल भी हमें इसमें कैसे यूज करते हुए देखेंगे, but see what are their explanation. A reference variable provide a alternative for the previously defined variable. A reference variable is created as follows: that data, then type and reference. हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हम किसी वेरिएबल के डेटा को यूज करके दूसरे डेटा को ये चेंज कर रहे हैं, राइट। सो हियर इज द एग्जांपल, फ्लोट इज इक्वल टोटल and is equal to 100, but we have to initialize this value to another float variable. Okay, so we take reference of this value to put this value into this, that is the actually this is address, it store address of this total. Okay, अभी देखिए क्या होता है, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, एक मिनट। सपोज मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, राइट। फ्लोट वेरिएबल कौन सा है, टोटल, राइट।
अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी 100, राइट। अब मुझे क्या करना है, उस वैल्यू को डबल पुटअप नहीं करना है मुझे, कहीं तो भी मुझे जब भी मुझे प्रोग्राम में कहीं उसे यूज़ करना है, सो मुझे वो वैल्यू तो चाहिए, लेकिन मैं उस वैल्यू को पुट नहीं करना चाहता। सो आई स्टोर, आई टेक वन float variable, that is ampersand sum. So this and denotes what, address of that number, okay। so मैं क्या करूँगा, उसका रेफरेंस दूंगा उस वेरिएबल को जहाँ पे मुझे इस वैल्यू की वैल्यू स्टोर करनी है। सो क्या करेगा, यहाँ पे मेरा वैल्यू स्टोर है, राइट, 100 एंड हियर वन ऑल्सो वन, ये मेमोरी ब्लॉक है, समझ लीजिए ये मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी कौन से इसकी वैल्यू स्टोर है, दैट इज टोटल, टोटल, राइट। टोटल की वैल्यू स्टोर है 100, बट इट हैव सम एड्रेस ऑल्सो, एड्रेस, इसके एड्रेस हम पुट कर दे देंगे यहाँ पे, इट्स 0, इट्स 1 एंड दिस इज 2, ठीक। तो ये एक एड्रेस है, सपोज लो 012 एक एड्रेस है, जिसमें एक एड्रेस में मैंने टोटल वेरिएबल की, जो भी टोटल नाम के वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर दिया है, राइट। सो इट हैव एड्रेस, इट हैव एड्रेस व्हाट, 0। सो व्हेनेवर आई यूज्ड another variable, so that is ampersand sum, that is nothing but the address of sum। so ये जो एम्परसेंड दिख रहा है, ये मुझे क्या बोल रहा है कि इसमें जो भी स्टोर रहेगा वो वैल्यू रहेगा किसका, एड्रेस रहेगा किसका, टोटल का। सो आई हियर ओनली स्टोर द एड्रेस ऑफ द टोटल, ओके। सो यहाँ पे स्टोर होते टाइम में क्या स्टोर होगा, वैल्यू नहीं होगी, उसका एड्रेस होगा, दैट इज 0। सो whenever I display that sum value, then it show me 100, इसका रेफरेंस। तो ये क्या कर रहा है, रेफरेंस ले रहा है टोटल के एड्रेस का, एंड इट शो द वैल्यू ऑफ दैट टोटल वेरिएबल, ओके। सो ये रेफरेंस कर रहा है, 0 रेफरेंस कर रहा है इस टोटल को, मीन्स इस एड्रेस को, राइट, and it address to have which value, that is the 100, okay। so whenever I display that some value, it show me 100, okay। so that is the reference variable। देखिए यहाँ पे देखिए, here is the total sum of reference, same as the object in the memory। if we change the total by total is equal to total plus 10, it will cause the change in the value both total and sum of to 110 similarly, because similarly sum is equal to 0 will change the value of both variables to 0, and reference variable must be initialized at the time of declaration। बस वही बोला गया, राइट, जो मैंने आपको अभी समझाया। our next topic is operators in C++। this is the another token in the C++, okay। C++ has the rich set of operators, list all the operators along with their association and the precedences, okay। the operators which are not in C are इंसर्शन। सी में कौन सा नहीं थे, इंसर्शन ऑपरेटर नहीं था, एक्सट्रैक्शन नहीं था, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं था, एंड पॉइंटर है, ये पॉइंटर टू नंबर और डिक्लेरेशन है, ठीक है। सो दिस इज द ऑपरेटर्स विच वी यूज्ड इन C++, okay। it is not in C।
So that will be overcome in this C++, that it in show put some another additional operators to enhance the code which will be written as. Okay, so देखिए अभी यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ पहले. देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है ऑपरेटर ऑपरेटर operator and second one is the operand. ठीक है, अब ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या है, जिससे हम ऑपरेशंस कर रहे हैं वो ऑपरेटर, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट, दैट ऑल आर द ऑपरेटर्स. एंड वॉट एवर भी वैल्यू, जैसे कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, जैसे कि 10 20, ऑल दिस थिंग्स आर द ऑपरेंड. जैसे कि मान लो ए प्लस बी, ये दो वैल्यू है, राइट. सो इसमें ये जो हो गया, ये जो ए हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेट ऑपरेट. एंड दिस वन व्हाट आई टोल्ड, that is operator. So now you clear what is the operand and what are the operator. So move to our slide. So here are some operators. First one is the postfix, prefix and unary operator. What are they? Okay, उसकी एसोसिएटिविटी क्या रहती है सब बताता हूँ मैं. पोस्टफिक्स में क्या होता है, जो भी ऑपरेटर रहेगा, जैसे कि ब्रैकेट हो गया, या फिर प्लस हो गया, या फिर माइनस हो गया, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये ऑपरेंड के पहले रहेगा, दैट इज द पोस्टफिक्स. सॉरी, इसमें क्या होगा कि जो भी अगर ऑपरेटर अगर ऑपरेंड के पहले है, दैट इज सपोज ए के पहले अगर ये पूरे ऑपरेटर, दैट इज द which operators, prefix operator. Okay, not a postfix, that is the prefix operator. And if operator is placed after the operand, this is postfix operator, right. And if only operator is there, if only operator is there of any operand, then that is the unary operator. Okay, so this is a prefix operator, prefix, that is postfix, and this one is the unary operator. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए पोस्टफिक्स ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या रहेगी, यानी मतलब हमें उसे काउंट किस तरह कैलकुलेशन करते हैं, हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट, एंड यूनरी एंड प्रीफिक्स के लिए राइट टू लेफ्ट. ठीक है, second one is the unary and type size of
new delete, or this will there is some more operator is that is a unary and type, size of, new and delete. These also the operators of C in C++. So whenever we use it, I will give some explanation regarding these operators. Okay, so pointer to member operator, that is the star star, it have associativity left to right. Then multiplication, division, module, you know about these operators, that is left to right. And addition, subtraction, this is have the left to right associativity. And again these two operator is there, that is left shift, and another one is the right shift. Okay, so it have also the associativity left to right. मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स की जो associativity होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है. दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके, हम जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह से लिखते हैं. We write like that. Like that we initialize in book, but in computer, whenever we use these operators, we initialize like that, less than equal to and greater than equal to. Okay, so keep in mind all the regarding these operators. We here are some more operators is there. One is the equality, inequality, that is left to right associativity. Ampersand bitwise. Okay, here is the power sign is there, that is a bitwise XOR. It is bitwise and it is bitwise XOR, and this is bitwise OR. Okay, this is a logical and 2 ampersand is there, that is a logical and. This is logical OR, and here is the conditional statement, that is a question mark. Okay, and here is the some assignment operator. Whenever we used, I will told about that. And simply is the comma operator. This is also the operator which have associativity left to right. Okay. Here more operators is present, that is star, pointer to member operator, then dot star, pointer to member operator. Okay, delete, memory release operator. Whenever we use this operator, it release the entire whole memory, whatever we clear the memory. Okay, and then line feed operator, new memory allocation operator. Whenever we use this keyword, it allocates some memory to our objects. Okay, and set w, field width operator. Okay, now two important operators is there, that is the insertion operator and extraction operator. What are they? We see. Okay, this is insertion or put to operator. It insert or sends the content of variable on its right to the object of on its left side. Okay, जब भी हम ये वाला ऑपरेशन यूज ऑपरेटर यूज करेंगे, कौन सा ऑपरेटर है? स्ट्रिंग इंसर्शन ऑपरेटर. ठीक है, जब भी हम आपने देखा होगा इसमें सी आउट, जब भी हम ये सी आउट, जब भी हमें कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी होगी या फिर कोई डेटा एक्सेप्ट करना होगा, हमें इनपुट करना होगा डेटा, सो दैट टाइम we use this insertion operator to insert data into that content. Okay, so this is. और इसका जो प्रोग्राम है ऑलरेडी सी प्लस प्लस में कोडेड होता है, सो दैट्स वाई वी डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट. whenever we put this sign and put some variable is here, it put the data into that variable. Okay, extraction operator, the operator is extraction operator or get from operator if extracts or takes the value from the keyboard and assign to its variable to its right.
this is similar to the scanf operation, right? Whenever scene, we accept the data from in scene. Okay, here we display the data to the uh, screen program. Okay, here we get output of the data, and here we input here we put input of the data. Okay, input to the data. Okay, so this statement calls the programmer to wait for the user to type a number. The number keyword is in place in the variable number 1. Scene is the predefined object in the C++ that corresponds to standard input stream. Here it represented keyboard. It will get the keyboard values. So हम देखेंगे इसको जब मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा, तब हमें और क्लियरिटी मिलेंगी, राइट? So student, today we stop here. In next lecture we see what is the structure and how we code. We do some code, one program, and explain what are their value, what are the we do in C++. Okay, so student, goodbye and stay safe and goodbye. Okay.